Once again, I will welcome you from the core of my heart. And my dear students, I am going to teach you Unit 2. In my previous class, I had already taught you about Steve Jobs' birth, upbringing and education. I have already told you he was an unwanted child. He said, yes, से जने अखोजा अलुड़ा पिला थिले अलुड़ा संतान थिले से निजको भाबुथिले कारण his prior to his birth he was unwanted and due to God's grace as a luck would have it he was somehow adopted by his foster parents. So after that his life began, but though his childhood was entirely spent in misery and poverty has grinded his family because its parents were working class persons and they had to work out their living by rotting a lot. So ultimately he says, I had to enter into Reed College. I did not know which was as expensive as Stanford. କହିଥିଲି ଆଗରୁ ସେମିତି ଗୋଟେ କଲେଜରେ ଆଡମିସନ ନେଲେ ରିଡ୍ କଲେଜ ଗୋଟେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଭଳିଆ ବ୍ୟୟବହୁଳ ଥିଲା. University, you should expect that it is expensive. But a college, it need not. But Reed College was such a college which was as expensive as Stanford. So all his working class parents' savings were spent in his tuition fees. So immediately he wanted to drop out from the course. And also another reason I have told you, he wanted to drop out because he thought that the education at Reed College was not going to help him in any way in the future. Therefore, he took the decision. But he said, after 10 years, when I was inventing, again after that also, he left the course. But he did not think that dropout will be a blessing in disguise. Again, immediately after that, he was inducted into calligraphy course. Calligraphy course with he knew about the typography, science serif and serif, typewriting and typography, and he know how a text will appear when the design is printed. And after that, when he invented the first human computer, that is Macintosh computer, he says, I did not think that the calligraphy will come to practical use in future. But after 10 years looking back, when I look back, ଯେତେବେଳେ ସେ personal computer Macintosh computer ଉଦ୍ଭାବନ କଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ଅନୁମାନ କଲେ yes, the decision I have taken that time was the right decision, because it was only because he learned about serif, sans serif in typography or calligraphy. As he knew about calligraphy, it made it possible to invent or discover this Macintosh computer. And the Macintosh computer had its own designs of beautiful fonts. He said, had I not dropped out from Reed College, and had I not dropped out from those courses in which I was not interested, and had I not dropped into the calligraphy course, perhaps this Macintosh would not have been beautiful typeface. ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି, it is impossible to connect our dots, means experience. ତେଣୁକରି ମୁଁ again କହୁଛି କାହିଁକି ମନେ ରଖ, it is not possible to connect our dots forward. We cannot connect our experiences, our dots. Looking forward means future. We can't connect our dots with future. It's impossible. We can connect our dots only with the past. Because by looking past, we can stand ourselves to future. When I was studying at Reed College, I could not prognosticate, I could not predict what will happen in future. But because it is impossible to connect the dots with the future, he could not predict that this course will be useful for him. But after 10 years, when he designed the first Macintosh computer, he could connect his experience to the past. Now, had I not been taught calligraphy, perhaps this Macintosh computer would not have been designed. It is impossible to connect our dots with the future. We can connect it looking backwards means only to the past. But sometimes we can connect our dots with the future. It is only through by connecting our experience with the past. we must concentrate ourselves on 4 things.
That is number one, courage. God कहते duty, courage, life, कर्म and faith. से कहते ये चारोटी जिनिस, this is a four-way path. These philosophy of the four things that has never let him down. कहले ये चारोटी ऊपर विश्वास करिके जीवन रे मोर केबे मते तळकु मु जानि नै, because these four-lane truth has never let me down, rather it has brought a new difference in my life. बरं ए मो जीवन रे अनेक परिवर्तन आछि मु जते बरे मु केवल ए चारोटी जिनिस ऊपर रहिछि, कोन भाग्य, कर्म एवं साहस एवं आ गोटे जीवन. तेणुकरी या पर आम यदि मनोनिवेश करवा जिते असुविधा थे वी मस्ट फोकस ऑन दिस फोर थिंग्स. तेणुकर से कहते दिस अप्रोच, फोर-वे अप्रोच, मु कहि फोर-लेन way, the four-lane approach has never let him down, rather it's made some difference in his life. ताको जीवन में अनेक परिवर्तन आछि. केमिति वर्तमान सेकंड स्टोरी, फर्स्ट स्टोरी तार कंप्लीट हे गला. फर्स्ट स्टोरी इज अबाउट हिज बर्थ, अपब्रिंगिंग एंड बर्थ, एजुकेशन, अपब्रिंगिंग, एवरीथिंग. केमिति पाठ पढिले, केमिति लालन पालन प्रथम गला. सेकंड इज माय सेकंड स्टोरी इज अबाउट लव. लखाइछि माय सेकंड स्टोरी इज अबाउट लस्ट एंड लव. मु के तुइ गुटे जोडी देबी love, lust and love. Love, lust and love. এটা কোন কি? Love for প্রেমিকা पे? No. Love for work. And lust from work. Again love for work. केमिति कोन ना काम को भलो पाइबा. काम को भलो पाइबा बेले बेले काम ठो हमें दुख रे मध्य हताश हे पुणी आमे पुणी साहस संचय कले पुणी अगेन आमे रिवाइव करि परिबा. Let us see. My second story is about love and lust. I was lucky. I found what I love to do early in life. I found what I love to do early in life. मो जीवन प्रथम आरंभ रे जहा को भल पाउथिली सेटा ही करबा को पाइली ना कोन पाइली. Was and I started Apple in my parents' garage when I was 20. We worked hard, and in 10 years, Apple had grown from just the two of us in a garage into a $2 billion company with 4,000 employees. We had just released our finest cruise Macintosh a year earlier, and I had just turned 30, and then I got fired. How can you get fired from a company you started? Well, as Apple grew, we hired someone who I thought was very talented to run the company with me. And for the first year or so, things went on, but then our visions for the future began to diverge, and eventually we had a falling out. When we did, our board of directors sided with him. So at 30, I was out, and very publicly out. What had been the focus of my entire adult life was gone, and it was devastating. ମୁଁ ଜୋରରେ ପଢ଼େଇ ଦେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଭାବୁନି. ସେଇଟାକୁ ହିଁ ବାରମ୍ବାର କହିବି, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ ବି ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ. ତେଣୁକରି ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯୋଉଟା ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଯୋଉଟା ଭଲ ପାଉଥିଲି ସେଇଟା କରିବାକୁ ମୁଁ ସୁଯୋଗ ପାଇଲି ନା. କାହିଁକି? Because I myself had watched Steve Wozniak. Steve Jobs and his intimate friend Steve Wozniak, both of them started Apple company in his parents' garage. Garage and proper English pronunciation garage no. आमे ओडिया लोक माने garage कहि दोछु. Pronunciation garage. तेणुकरी both the friends Steve Jobs and Steve Wozniak started Apple Incorporated, Apple company in his parents' garage. And se कहते we worked, it was I was 20. तो जेतबेले से बापा गारेज रे Apple company start कले सेतबेले लोक के जण थिले मात्र 2 जण. At that time there were 2 persons and there was nothing with them, only the fact केवल भाग्य ही तांको साथी रे थिला एवं सेतबेले तांको बयस was only 20. But within a span of 10 years Apple grown, it reached an incredible height. It reached its pinnacle. It reached its summit. किंतु मात्र 10 वर्ष भितर से एप्पल कंपनी उन्नतिर चरम शीर्ष व चरम शिखर में पहुंची जाइला. केमिति ना मात्र 2 जण लोक से पहुंची गला. केते लोक 4000 एम्प्लॉय विथ $2,000 billion turnover of the company. तेणुकरी मात्र 10 वर्ष जो कंपनी से स्टार्ट करते मात्र 2 जण, स्टीव जॉब्स एंड स्टीव वोजनियाक. It included 4,000 employees to its credit. 10 वर्ष भितर 4,000 एम्प्लॉय का रही गले एवं $2 million and $2 million
सांगे सांगे हो गला तुम्हें कह ये सब कहीं पॉसिबल ऑल दिस कुड बी पॉसिबल बही लिखाई किंतु तुमको पचारे तुम कौन कह ऑल दिस कुड बी पॉसिबल ड्यू टू सिंसियर डिवोर्स डिटर्मिनेशन डेडिकेशन ऑफ स्टीव जॉब्स टू वर्क काम प्रति तांकर लगन मन ध्यान डेडिकेशन से केवल एटा पाई किंतु बड़ दुखर जिनस होता ना कौन देख एंड वी हैव जस्ट रिलीज्ड आवर फाइनेस्ट क्रिएशन मैकिंटॉश जो टिके आगु पढ़ी यूनिट 1 ने he had designed the Macintosh computer तेणुक लिखाई से माने we have just released our finest creation human first human computer that is Macintosh and a year earlier केते just तामाने ताकर 30 वर्ष तामाने केबे केते वर्ष ताकर 29 वर्ष just a year before they had designed the Macintosh computer and I had just turned 30 तापर ताकर 30 वर्ष हे गला and then I got fired सबुट important I got fired फायर माने निया लगी नुहे मन रख फायर मीन्स ही वाज डिसमिस्ड फ्रॉम द कंपनी ही वाज डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस ही वाज आउटस्टेड फ्रॉम सर्विस ही वाज एलिमिनेटेड फ्रॉम सर्विस एंड ही वाज आउटस्टेड अल्टीमेटली ही वाज डिसमिस्ड फ्रॉम द कंपनी बट क्वेश्चन अराइजेस तो मन को प्रश्न उठुतो ए कंपनी मालिक तो से सांग थे सी तो कंपनी को बढ़ाइले 4000 क्विंटाल बाहर केମିତି से कंपनी जो कंपनी निजे तैयारी कर से कंपनी पर काढ़ी पार मो दुकान मुझे मो दुकान मत किए काढ़ किए संभव ना मो दुकान मत किए काढ़ कहते ना ये कमर्स पिला थे भल बुझी था जब कमर्स पिला भी यहाँ देखिए जापर बिकज कमर्स अच्छे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आम जो सेयार सब सेयार होल्डर्स कंपनी जो कंपनी चले बड़ बड़ हो जाए से तार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आसती 6-7 जन 8 जन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सेमती आगुरी टे बुझे दूसरी ना तुम जापर तेणुक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो थे कंपनी जो बड़ होगा से छोट बेले किसी न था अति जो बड़ होगा सेयार से सब मार्केट रू मागंती और सेयार होल्डर्स मैंने रही सब एगुड़ा कमर्स पिला जानते तो यहाँ बहुत लाभ होगा से सी कौन कले एडे बड़ कंपनी तो 4000 लोक हो इज इट प्राक्टिकेबल टू मैनेज दिस ग्रेट कंपनी तेणुक से कौन कले इमिडिएटली से चाहिए 2 जन बर्तमान कंपनी ओनर अच्छे से आउ जड़े जब होता कंपनी भल चली था एग्जांपल विनायक कॉलेज 500 पिला होती 2 जन डायरेक्टर जब 2000 पिला हठात कि नहीं गले हुए तो मैंने चाहिए आउ जड़े जब हो पारता साहय कर एटा गोटे कॉलेज से कंपनी तेणुक से चाहिए आउ जड़े जब किए लोक होता स्टीव जॉब्स स्टीव वोजनियाक और से 3 जन मिसी कंपनी को भल भाव मैनेज करते तेणुक इमिडिएटली एनादर पर्सन यंग टैलेंटेड चैप वाज हायर माने भड़ारे आसला माने he also became the partner तेणुक से मिसिले एवं कंपनी ठीक चलला फॉर ए ईयर और 2 द कंपनी प्रॉस्पर ठीक चला किंतु लगे ग्रेजुअली लिखा आवर विजन ऑफ फ्यूचर बिगैन टू डाइवर्ज तेणुक धीरे धीरे जो कंपनी बढ़े समस्त कौन हुए आउटलुक आउट नॉलेज कंपनी बढ़े धर गोटे मालिक कह एमती कले एमती होता मुझे आउ जन जोटा यहाँ एमती करा कंपनी आहरी प्रॉफिट पाई पारता तेणुक धीरे धीरे कंपनी विषय आउटलुक बढ़ला से बहुत किसी बढ़ला एवं जिते बढ़े जिते आय बेसी हुए जिते आउटलुक बढ़े तेणुक से बेसी जुक्ति तर्क हुए ए बेले बेले एमती भी केस आसी जाए जे आम भितर गंडगोल भी बेले बेले देखा जाए क्या भितर नुहे कि मु एवं मो सांग बिजनेस आरंभ करपर्यंत आम लॉस अच्छी देखो केवे कहीं क्या सन्देह कर जो प्रॉफिट हो सन्देह करी सी मत सन्देह कर सी कह संजय सार खाली से बसिकी ऑफिस रे एक दुकान में से लाभ कर दुकान में खटुची चारिड़े बसिक मुझे खटुची मुझे भावी तार आराम खाली बुलूची इे सियाड़ कर सब एक सब लोक पाखापाखि डेली मुझे कहीं करी एमती सन्देह आरंभ तेणुक भितर कंपानीर कौन पाई खराब पाई कंपानीर डेभलपमेंट भितर बहुत आउटलुक आसला एमती गोटे समय है भितर जुक्ति तर्क है लिखाई तेणुक कंपनी स्टार्टेड वेल एज Apple grew we hired someone who I thought was the talented to run the company with me and for the first year or 2 things went well सब ठीक ठाक चलना वर्षे 2 वर्ष बट देन आवर विजन ऑफ फ्यूचर विजन माने दूरदृष्टि एटी विजन माने फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंपनी कौन चलला फ्यूचर डाइवर्स एंड इवेंचुअली वी हैड अ फॉलिंग आउट मन रख फ्रेजल फॉल आउट माने प्रकृति होची क्वारे एठी कौन फॉल आउट माने मारकुल गंडगोल मारगोल लगे देयर आर सम कंट्रोवर्सी बिटवीन भितर एमंग भितर कंट्रोवर्सी मनोमालिन्य बेले बेला एवं लिखला
and that fallout reached a place. It came to a pass, PSS. एमती गोटे जगह पहुंचला जो अल्टिमेटली सिचुएशन बिकेम टफ लिखा है एंड इवेंचुअली वी हैड अ फॉलआउट एवं व्हेन वी डिड माने आम भितर गंडगोल है कंट्रोवर्सी है एवं इवेंचुअली माने अल्टिमेटली जो गंडगोल बेसी है तमाने व्हेन इट ग्रीव इनटू मैग्नानिमस फॉर्म जो बड़ हो गला अल्टिमेटली लिखा है आवर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स साइडेड विथ हिम एंड आई वाज फायर एट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स साइडेड विथ माने साइड रे जिबा एंड आई वाज फायर कोई कंपनी बाहर केमिति ना सी तो तांकर इंटीमेट सांग थे स्टीव जॉब्स कंपनी बढ़ी गले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सपोज 8 जन अच्छा मुझे स्टीव जॉब्स मो सांग स्टीव अजिने आउ जड़े नुआ बर्तमान से नुआ लोक जनक सी एम सपोर्ट करा से कौन बोधे तेल मारला कौन कला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैक्सिमम ताकू सपोर्ट करे तापर मीटिंग हुए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग है से समस्त सपोर्ट कले क्या द न्यू टैलेंटेड चैप वाज सपोर्टेड बाय ऑल किंतु स्टीव जॉब्स केवल सपोर्ट कले कि सांग एठी लिखाई बही स्टीव जॉब्स लाइफ हिस्ट्री ऑटोबायोग्राफी से तेणुक तादर लिखाई जे सांग सपोर्ट कले तेणुक मेजोरिटी मस्ट बी ग्रांटेड कोरम तेणुक समस्त तो सपोर्ट कले ऑटोमेटिकली ही वाज आउटस्टेड ही वाज डिसमिस्ड ही वाज टर्मिनेटेड फ्रॉम द कंपनी तेणु अल्टिमेटली ही वाज टर्मिनेटेड फ्रॉम द कंपनी तेणुक जदि क्वेश्चन आसे बुझे जो कंपनी निजे स्टार्ट हम से कहीं बाहर ना बिकॉज you don't run the company when the company reaches its height. It is run by a number of people, that's board of directors. So what they say, the company runs in their name. तेणुक निजे से तड़ा खाइले और जो तड़ा खाइले बयस के ही वाज 30 आरंभ करते 20 जो लोक निजर झाड़ मुंडर झाड़ तुंडे मारी एत कष्ट करके नेक ब्रेकिंग टॉयल बैक ब्रेकिंग टॉयल विथ नेक ब्रेकिंग स्पीड he amassed the company and took the company to an incredible height. एते बड़ कंपनी में हाइट को नहीं जो से बाहरी से समय केमी लगी लिखाई एंड आई वाज आउट एंड आई वाज पब्लिकली आउट माने बिकॉज ही वाज ए पब्लिक फिगर ही वाज एन इंटरनेशनल फिगर बिकॉज ऑल द वर्ल्ड द पीपल ऑफ द वर्ल्ड न्यू हिम समस्त जानते तेणुक सी आउट हो गले मुझे विनायक कॉलेज आउट हो गले मत केवल विनायक कॉलेज जान आम स्टूडेंट जाने कि जो मोदी आज कौन से कारण इलेक्शन है हारीगले खाली भारत में पृथ्वी सारा जाने तेणुक ही वाज एन पब्लिक फिगर therefore when he was out he was publicly out and it was quite devastating like I तेणुक and it was devastation माने होची ध्वंस devastation ध्वंसात्मक एठी कोन ध्वंसात्मकता माने होची he felt as if his career had been destroyed and devastated सत्य जेपरी सी जो कंपानी बाहरी गले लगे जीवन दीप जमी लिभे भी गला एवं आई रियली डिड नॉट नो व्हाट टू डू फॉर ए फ्यू मंथ्स तेणुक से प्रथम कई मास कौन करेंगे से चिंतार रही आई फेल्ट दैट आई हैड लेट द प्रीवियस जनरेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर्स डाउन दैट आई हैड ड्रॉप्ड द बैटन एज इट वाज बीइंग पास्ड टू मी आई मेट डेविड बैकन and Bob Noyce and tried to apologize for screwing up badly. I was a very public fellow and even I thought about running out from the valley, but something slowly began to dawn on me. I still loved what I did. The turn of events at Apple had not changed that one bit. I had been rejected, but I was in love. So I decided to start over. I really did not know what to do in those few months. ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ କାଢ଼ିଦେଲେ ସେ 3-4 ମାସ से कौन करेंगे से जानी पारे ना तेणुक से कौन कले लिखुं आई फेल्ट दैट आई हैड लेट द प्रीवियस जनरेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर्स डाउन दैट आई हैड ड्रॉप्ड द बैटन एज इट वाज बीइंग पास टू मी नॉन डिटेल न पढ़ी चली गला किंतु एमती जिन तुमको न पढ़ेले मो मन कितु धैर्य धरबनी किंतु एटा परीक्षा रे जिन पढ़बनी किंतु बैटन माने मन रख लिगेसी डिफरेंस लिगेसी गोटे परंपरा मु भल गीत गाँच मो बापा भल गीत गाँति मो जेजेबापा भल गीत गाँति बर्तमान किंतु मोर कई पुओ ना मोर जो 4 पुओ 3 पुओ जाक बालुंगा किसी कले तेणुक मो जो गीत परंपरा जो लिगेसी एटा बैटन कुड नॉट बी पास्ट किंतु
ଯାହା ହଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ମୋ ଚାରି ପୁଅ ଭିତରୁ ସାନ ପୁଅଟି ସେ ଗୀତ ଶିଖିଲା ଏବଂ ଭଲ ଗୀତ ଗାଇଲା। ତେଣୁ ତମେ ଥର କୁହ, ଦ ଲିଗେସି ଅର୍ ବ୍ୟାଟନ୍ ୱାଜ୍ ପାସ୍ଡ ଟୁ ହୁମ୍? ଟୁ ମାଇ ୟଙ୍ଗେଷ୍ଟ ସନ୍। ତେଣୁକରି ଆମ ଘରେ ଯେଉଁ ଗୀତର ପରମ୍ପରା ଥିଲା ସେଟା ଅନ୍ୟ ତିନି ପୁଅ ମୋର କେହି ଶିଖିଲେନି, କିନ୍ତୁ ତା ପାଖକୁ ଗଲା ବ୍ୟାଟନ୍ ଲିଗେସି। କିନ୍ତୁ ଏ ବ୍ୟାଟନ୍ର 5ଟା ଇଂଲିଶ ଅଛି, ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବିନି, ଗୋଟିଏ ଖାଲି କହିଦେଉଛି। ବ୍ୟାଟନ୍ କାହାକୁ କହନ୍ତି ନା ସ୍ପୋର୍ଟସରେ ରିଲେ ରେସ୍ରେ ଦୌଡ଼ନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ହାତରେ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ବାଡ଼ି ଧରିଥାନ୍ତି, ଏଡ଼ିକି ଏଡ଼ିକି ବାଡ଼ି। ରନ୍ ଆଜି 4x100 ମିଟର୍ସ ରିଲେ ରେସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ 100 ମିଟର୍ସ ଦୌଡ଼ିବେ 4 ଜଣ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ହାତରେ ବାଡ଼ି ଥାଏ, ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବ। ଇଏ ଦୌଡ଼ିବ କିଛି ବାଟ 100 ମିଟର୍ସ, ତାକୁ ଦେଇଦେବ, ସେ ତାକୁ ଦେଇଦେବ। ଏଇଟା କ'ଣ କି? ଦିସ୍ ଇଜ୍ ବ୍ୟାଟନ୍। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜଣେ ଜଣକୁ ଦେଉଛି। ପୁଣି ମନେ ରଖ, ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଶୋ ପୁରା ଦେଖ, ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବ, ବେଳେବେଳେ ଦେଉଥିବ ଟେଲିଭିଜନରେ, ଏକାବେଳେ ମ୍ୟୁଜିସିଆନ୍ସ ବସିଥିବେ, ଗିଟାର ବଜାଉଥିବେ ପୁରା 50 ଏବଂ ତବଲା ବଜାଉଥିବେ ପୁରା 50। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ 50 ଭାଉଲିନ୍ ବଜାଉଥିବେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଏକ୍ସଟ୍ରାଭାଗାନ୍ସା। ମନେ ରଖିବ, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ବଜାନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଖାତା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖିବ, ନୋଟ୍ କାଗଜ ଥିବ, ଏବଂ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ବଜାଉଥିବେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଦେଖିବ ହେଡ୍ ଗୋଟେ ପୁରା ପଛପଟେ ଠିଆ ହେଇଥିବ, ସେ ହାତରେ ଗୋଟେ ବାଡ଼ି ଧରିଥାଏ, ସେମାନେ ବଜାଉଥିବେ ଏମିତି 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 କରୁଥିବେ। ଇଏ ଯେଉଁ ଏଇ ଜିନିଷଟି ଧରିଥାଏ, ଏଇଟା କ'ଣ କି? ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ବ୍ୟାଟନ୍ ଲିଗେସି। କାରଣ ସେଇଟାକୁ ଦେଖିକି ତାର ଏଇ ଉପର ତଳ ଦେଖିକି ସେମାନେ ଗ୍ରାଫ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରନ୍ତି ଏବଂ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ବଜାନ୍ତି। ସେମିତି ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଭିତରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଟନ୍ ମାନେ ଲିଗେସି ମାନେ କ'ଣ? ମୋ ଭିତରେ ଯେଉଁ ବିଜନେସ୍ ମାନର ଯେଉଁ କଳା ଥିଲା, ମୁଁ ଯେଉଁ ମୋ ଭିତରେ ଯେଉଁ ତାର ନଲେଜ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବାହାରିଗଲି କମ୍ପାନୀରୁ, ମୋତେ ଲାଗିଲା ସତେ ଯେପରି ମୋ ଜ୍ଞାନ, ମୋ କାରିଗରୀ, ମୋ କୌଶଳ, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବିଦ୍ୟା ସବୁ ଯେମିତି ବାହାରକୁ ପଳେଇଛି, ଆଉ ଇଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ବି ସକ୍ସେସଫୁଲି गिवन टू द यंगर जनरेशंस। Therefore he was frustrated. बुझेइले एते जिंस पई एते समय. So he felt as if his younger generations will not get the scope to acquire his knowledge. ताको knowledge पाई पारलेनी, ताको मन दुख होइगला एवं सेतबेले से लिखिचंती, I met David Packard and Bob Noyce and tried to apologize for screwing up so badly. ताले मन रख से कहउचंती ଯେତେବେଳେ ଧକ୍କା ପାଇଗଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଗଲେ କୋଉଠି ନା ସେଇ ଆପଲର ଆଉ 2 ଜଣ ବଡ଼ ଡାଇରେକ୍ଟର୍ସ ଥିଲେ, ସେମାନେ ପାର୍ଟନର ଥିଲେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଯାଇ କହିଲେ, ସେ 2 ଜଣ ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ, ତ ଡେଭିଡ୍ ପାକାର୍ଡ ଏବଂ ବବ୍ ନଏସ୍। ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ଦେ ୱେଆର ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ଟୁ ହିଜ୍ ଗ୍ରିଭେନ୍ସ, ଦେ ୱେଆର ଡିପ୍ ହିୟର ଟୁ ହିଜ୍ ଗ୍ରିଭେନ୍ସ। ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆଦୌ କର୍ଣ୍ଣପାତ କଲେନି। ଏ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଲେ, ଲେଖା ହେଇଛି ଆପୋଲୋଜାଇଜିଂ ଫର୍ ସ୍କ୍ରିଭିଂ ସୋ ବ୍ୟାଡଲି। ଆପୋଲୋଜାଇଜ ମାନେ କ'ଣ? କ୍ଷମା ମାଗିବେ। सो ये गले जाइए से डेविड पाकार्ड को मीट करके क्षमा मांगिले, आज्ञा मत क्षमा करंतु, मु जहाँ कर देछि भूल कर देछि, स्क्रीम अप सो बैडली, जहाँ मु कर देछि मत क्षमा करंतु। किंतु प्रकृति में से किछि भूल कर नथिले, से कोन भूल करथिले, किंतु प्राइवेट कंपनी भूल मागिबा को पड़िबो। छोट कथा मु कहि दोछि, समय नष्ट मत आज कॉलेज काढी देला, मु सिंसियरली पढौछि, किंतु कोन एमितेला कॉलेज मते काढी देला। जेतबे डायरेक्टर मते काढी देले, मो आखिर धार धार लो बहि गला। मु प्रिंसिपल को अप्रोच कली, प्रिंसिपाल कहले देखो आप गोटे कम करूँ, जहाँ है आप 2 डायरेक्टर को जाके भूल मागि दिखाँ, से निश्चय आप भूल तो मुझे कह बट फॉर फैक्ट मु तो किसी भूल करनी, मुझे पढ़े ना आज्ञा प्राइवेट इन्स्टिट्यूशन जहाँ भूल मागि दिखाँ। तेणुक प्रिंसिपाल कथा जाकि डायरेक्टर कह, डायरेक्टर मो कथा शुणिले ना एक्जाक्टली से व्हेन ही मेट डेविड पाकार्ड एंड बॉब नॉइस दे डिड नॉट पे एनी हिट टू हिज ग्रीवेंस, टू पे एनी हिट टू कर्णपात तांको कथा शुणिले ना एवं बाध्य से कौन कले एवं एंड आई थॉट आई वाज ए पब्लिक फेलो। तो सेठड़ा कहला आई हैड बिकम ए पब्लिक फिगर एंड व्हेन आई वाज आउटसाइड फ्रॉम द कंपनी और रिमूव्ड फ्रॉम द कंपनी और व्हेन आई वाज सैक्ड फ्रॉम द कंपनी, फायर्ड फ्रॉम द कंपनी, टर्मिनेटेड फ्रॉम द कंपनी, सेतबेले मते लागिला कौन से कहउचंती इट वाज ए आई वाज ए पब्लिक फेल्योर एज आई वाज ए पब्लिक फिगर, so I felt as if I was a public failure. So it is important लास्ट प्रिवियस क्लास में मुझे कही तांको जीवन में एमती आसला से जो आत्महत्या करने को जाइए, तेणुक से कहते आई रैन फ्रॉम वैली टू वैली, उपत्यका उपत्यका से बुली बुली बुलवा लगे। ताने कौन उपत्यका बुलुले? नो, गोटे भल इडियम्स मन रख, ही रैन फ्रॉम पिलार टू पोस्ट इन क्वेस्ट ऑफ ए जॉब, पिलार टू पोस्ट, द्वार द्वार हो चारिआडे घूरी बुलते किंतु पाइले ना। से आत्महत्या करने को भाई बही ना लाइफ हिस्ट्री अच्छी
किंतु आत्महत्या करने को जाउछंती सेही मुहूर्त रे इमिडिएटली ए न्यू डन केम ओवर हिम डन माने DAWN नूतन सकाळ प्रत्युष एक नूतन प्रभातर उदय है अद्भुत है एवं हठात किना तांको जीवन रे एक नूतन अद्भुत है एक चरम उद्भासित किरण आभा है एवं कौन है a slowly began but something slowly began to dawn on me I still loved what I did कहले मु जेतबळे एभଳି कंडीशन ने थिली सेतबळे हठात किना एक नूतन सकाळर आविर्भाव हैला एवं सेतबळे किंतु मु तथापि भल पाउथिली जहा पढुथिली ताकु मु भल पाउथिली I loved what I did लेखाई छे still then I still loved what I did मु जहा करूथिली ताकु भल पाउथिली मु इठुटे जोड़ी देबी भाइस वर्षा I loved what I did and I did what I loved मु जहा भल पाउथिली ता कली एवं जहा करूथिली ताकु भल पाउथिली पुणी जाइछन डाभिड पाकाड को पाक पुणी जाइछन कहउछन बट द सिचुएशन ऑफ द कंपनी हैव नॉट येट बीन चेंज्ड सेतबळ मध्य कंपनी अवस्था कोनोसी बदली नथिला ता माने ताकु तथापि से आउ थरे से जाई केतळे पचाइछन डाभिड पाकाड एवं बॉब नॉइस को समाने राजी हेनांती चाकरी देवा पई एवं आई हैड बीन रिजेक्टेड बट आई वाज स्टिल इन लव well at that time I feel as if I had been rejected but still I was in love kaha soito premika na I was in love with my work and so I decided to start over tenu kori mu thik kali I have to give a new start to my life tenu kori mo जीवन को एक नूतन दिगंत देबी मते किछ गोटे नुआ करबा को पड़िबो I did not see it then but it turned out that getting fired from Apple was the best thing that could ever have happened to me because सेतबळे मो कितो जानि नथि जे Apple नु बाहरी जबाटा मो पई एक आशीर्वाद हो बोली इट इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज छद्म बेसरे मोर Apple कंपनी नु बाहरी बाटा जे छद्म बेसरे एक आशीर्वाद ता हमु कितो बाहरला बेले जानि नथि लेखाई I did not see it then but it turned out that getting fired from Apple fired माने कोन बाहरी जीवा किंतु Apple बाहरी जीवाटा मो पई जे छद्म बेसरे एक आशीर्वाद थिला मु ता जानि नथि ना कोन आशीर्वाद हला देखिबा the heaviness of being successful was replaced by the lightness of being a beginner again less sure about everything कहले heaviness of being successful was replaced by the lightness of being a beginner माने से सेतबळे हेवीनेस ऑफ सक्सेसफुल से जेहेतु सक्सेस थिले कहउथिले कारण से Apple कंपनी नो CEO थिले नंबर 1 थिले तेणु सेतबळे तांको मुंडरे कोन थिला हेवी थिला मनीष जेतबळे चरम सीमा रे उन्नति रे से बडन थाए जेतबळे धोनी कैप्टन थिले सेतबळे तांको मुंडरे बोझ थाए तेणु जदि दीटा पिला आउट हे गले प्रथमे धोनी को ऊपर टेंशन पड़िबो ठीक ना नहीं तेणु सी थिले टॉप पोजीशन तेणु हेवी थिले किंतु आज जो बाहर जाइछन्ती से कहउछन्ती हेवीनेस ऑफ बीइंग सक्सेसफुल वाज रिप्लेस्ड बाय लाइटनेस ऑफ बीइंग ए बिगिनर वर्तमान हेवी अछन्ती कि चाकरी तो बाहर गले वर्तमान हल्का मन हल्का केमिति ऑफ ए बिगिनर सिया निजको भाबुनांती मु स्टीव जॉब्स CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर से वर्तमान भाबुछन्ती मु होची स्टीव जॉब्स एक ऑर्डिनरी मनीष एक साधारण व्यक्ति ए बिगिनर माने कोन जहाँकि मु नुआ मते पुणी पाठ पढ़ा पड़ो तेणुक आम ये कौन भाई था मु विनायक कॉलेज प्रिंसिपाल मुझे आहरी गोटे ये करी एक्जामपल दौर मु विनायक कॉलेज प्रिंसिपाल बर्तमान बाहरी गली चाकरी मत बर्तमान जड़े लोक कहे सार चिंता करते ए किसी दिन आप सार पान दुकान मोर अच्छी सार कौन कर माने विनायक कॉलेज प्रिंसिपाल पान दे चून मारि नो एटा हवा उचित नुहे मुझे भाविया दरकार बर्तमान मु प्रिंसिपाल नुहे मु केवल संजय दास मनीष तेणुक यही पान दुकान जदि करी हूँ यही पान दुकान मु पुणी पानामा केनाल पर्यंत पहुंची पारि तेणुक मत से दिगंत दरकार तेणुक ये से भावी द हेवीनेस ऑफ बीइंग सक्सेसफुल वाज रिप्लेस्ड बाय द लाइटनेस ऑफ बीइंग ए बिगिनर तेणुक सब जिनस को छोट मन कर निजक पुणी कर्तव्य को छाड़ीदे लेस श्योर ऑफ एवरीथिंग इट फ्रीड मी टू एंटर इनटू वन ऑफ द क्रिएटिव पीरियड्स ऑफ माय लाइफ कहले ये मो एक क्रिएटिव पीरियड गठनमूलक एक नूतन जीवंत नूतन जीवन भितर को प्रवेश करी एवं कौन कली ड्यूरिंग द नेक्स्ट 5 years I started a company named Next, another company named Pizza,
and fell in love with an amazing woman, Lawrence. Lawrence ଏଇଠି ଦେଇନି ବହିରେ, ତଳକୁ ଦେଇଛି, ମୁଁ ଜାଣିଛି ବୋଲି କହିଦେଉଛି ଆଗ। Lawrence would become my wife. ତେଣୁକରି ନେକ୍ସଟ 5 ବର୍ଷ ସେ କ'ଣ କଲେ? ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କଲେ, ଖଟିଲେ। So he fought tooth and nail. He fought with a back-breaking toil in a neck-breaking speed. ଅଣ୍ଟା ଭଙ୍ଗା ପରିଶ୍ରମ, ବେକ ଭାଙ୍ଗିଲା ଭଳିଆ ସ୍ପିଡରେ କଲେ ଏବଂ 5 ବର୍ଷରେ 2ଟା କମ୍ପାନୀ ଠିଆ କରିଦେଲେ, ପିକ୍ସାର ଆଣ୍ଡ ନେକ୍ସଟ। ତେଣୁକରି ଲେଖାଗଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ, ନେକ୍ସଟ, ଆନାଦର କମ୍ପାନୀ, ପିକ୍ସାର, 2ଟା କମ୍ପାନୀ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ଏବଂ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଇଲେ ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ଲରେନ୍ସ। ଏବଂ ପିକ୍ସାର went on to create the world's first computer animated feature film.